AI-R2 and AI-R3 apart in UPSC CSE 2024. They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours. It's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AI-R2 and AI-R3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours. It's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AI-R2 and AI-R3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours. It's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AI-R2 and AI-R3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours. It's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AI-R2 and AI-R3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours. It's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started.
What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started.
What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity, and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity, and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity, and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started.
Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity, and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started.
What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started. What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started.
What sets AIR2 and AIR3 apart in UPSC CSE 2024? They didn't wait to feel ready. They started smart with the GS Foundation course at Vision IS Delhi. Structured learning, focused current affairs, real mentorship, test feedback that actually helps you grow. This course isn't just about study hours, it's about direction, clarity, and the strategy toppers trust. Start strong. Start where toppers started.
So hey, good morning. All good. How many of you gave exam this year? You have given? You two? Four. How well you are scoring? 82. Very closer. About you? Okay. एक बार इसको connect कर देना. And what about you two? पता नहीं है. Calculate नहीं किया. Today you can expect the results. Probably. I think today it will come. My sources, I got to know. 2 minute wait कर लो. हो गया? I'll do one thing. Questions को अभी visible है? It's fine. ठीक है. So as you know, message तो पढ़ा होगा that it is for 3-year paper discussion but मैंने इसमें एक और year जोड़ लिया है, ठीक है? तो 23, 24, 25 का था but I have added 22 also so that थोड़ा ज़्यादा range होगा and we can मतलब we can get to know that from which all areas UPSC is asking questions and थोड़े बहुत answer discussions भी और answer discussion के साथ साथ में ना I'll tell you the some of the fallacies which happens in the market when UPSC releases its answers then तो पहले तुम लोग की general problem I want to know and then I'll start with it, ठीक है? तो if you have any general query related to modern Indian history तो you can ask कि जैसे that you are saying that you are expecting results then तो obviously it all comes down to कि mains में क्या करोगे, ठीक है? कि इस सेक्शन के लिए मेंस में व्हाट यू विल बी डूइंग एंड देन सम ऑफ यू विल बी मे बी यू विल बी राइटिंग नेक्स्ट ईयर एंड सो आई विल स्टार्ट विद दोज हु आर राइटिंग नेक्स्ट ईयर. समझो इस बात को. आई एम एक्सपेक्टिंग मोर नंबर ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिकॉज अपवर्ड ट्रेंड हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर. देन सो इसके पहले तक अगर जो इस पेपर में ही देखो, ठीक है, यू कैन काउंट 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न 1 2 3 4. सो 4 क्वेश्चंस थे मॉडर्न से, ठीक है? यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है. देन 2023 में देयर वर जस्ट 3 क्वेश्चंस, 1 एंड देन 2 एंड 3, ओनली 3 क्वेश्चंस, ठीक है? 2024 में बस 2 क्वेश्चन, 4 3 2, ठीक है? 4 3 2 एंड 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस, ठीक है? So total 8 questions are there this year. तो upward trend has started. इसका मतलब कि next year में आराम से 5 या 6 question expect कर सकते हो, ठीक है? 5 or 6 question you can expect because if you जैसे तुमने preparation start की, you have just started 2 year back, 1 year back, then so you have an idea of just 2-3 years. But I'm seeing this paper from last 14 years. Then and from last 14 year the trend has been कि एक बार declining trend होता है. Bell curve you know कि एक बार ऐसे जाता है, pause फिर decline, ठीक है? So modern Indian history from very long time there was a declining trend of the number of the questions in the prelims examination. Now it has started to go up. It will go up little up then and then after it will come to a plateau. So अभी 1-2 साल you can expect more number of questions would be there from the modern Indian history. But चलो I'll not ask your scores but ये तो बताओ all of you I think appeared in exam this year या किसी कोई नहीं appear हुआ हो? Anybody? You two did not appeared. So paper was not that easy and particularly the section of science and tech and science and tech was tough. So as I get to know that economics paper was bit tough but it all depends on understanding. Economics would always be like that only कि अगर जो understanding अच्छी है तो paper will be easier for you and if understanding is not well पहले अच्छे से उसकी पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर then obviously it will be difficult.
But the one section which was savior was the history section. Then, and why it was savior? I think all of you were there in my class. किसी न किसी वे में तो connected हो. कुछ लोग को तो मैं directly समझ पा रहा हूँ, ठीक है? I have seen you guys in the classes. So, out of 16 questions which were there, barring 2 questions, 14 are there in the class notes. मतलब मैंने पढ़ाया है, मेरे क्लास नोट से यूपीएससी नहीं पूछता है, ये कहना गलत होगा. मतलब पीपल से कि मेरे क्लास नोट्स, ऐसे नहीं होता है. दिस इज द सिलेबस, ठीक है. आई हैव टॉट इट, जो तुम्हें हेल्प हो गया, ठीक है. सो 14 क्वेश्चंस आर देयर इन द क्लास नोट्स. 1 क्वेश्चन इज देयर ऑन द कल्चर क्वांटम वीडियो, ठीक है. एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है. सो आई टेल यू इन टूडेज एनालिसिस ऑल्सो दैट कौन सा हमने बात नहीं की. हाँ, अलबत्ता प्रेडिक्शन किया था मैंने कि अ क्वेश्चन ऑन मदन मोहन मालवीय कुड बी आस्क्ड, बट दे आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है. सो प्रेडिक्शन आई डिड राइटली कि मदन मोहन मालवीय इज अ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर दिस ईयर. सो अंडरस्टैंड. So history was a savior, and if I go by the previous year papers also, जितना तो कितने लोग आप लोगों में से स्पेक्ट्रम पढ़ते हो? Raise your hand. मतलब you have purchased a spectrum. So I'll tell you one thing, that you have purchased a spectrum, and still if you would have gone with the spectrum, so जो modern Indian history के जितने questions हैं ना, 8 questions हैं ना, उस 8 questions में से 2 question तुम solve नहीं कर पाते, going by the this part of the spectrum, ठीक है. तो 6 क्वेश्चन सॉल्व करते, एंड गोइंग बाय द क्लास नोट्स ऑल्सो 7 क्वेश्चन सॉल्व करते. सो सेम इज द थिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर ऑल्सो. प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन था, अभी डिस्कशन में जाएंगे, बट दैट जस्ट आई वांट टू कम टू दैट क्वेश्चन. ये 23 का क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, 7th अगस्त एंड स्वदेशी मूवमेंट, ये भी स्पेक्ट्रम में नहीं था, ठीक है. देन 23 का दोनों क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में नहीं था. जस्ट लेट मी टेल यू दैट टॉपर्स भी आके बोल के चले जाते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है. सो फर्स्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है. एंड 1919 क्रिप्स मिशन, इजी क्वेश्चन. देन गदर मूवमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, इजी क्वेश्चन. कॉर्नवालिस, विल कम टू दैट. राम मोहन रॉय. सो लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने ऑमिट कर दिए हैं, दे हैव पुट इट इन द मिडीवल एक्चुअली. तो आई विल डू इट फ्रॉम दिस वन, ठीक है. एक आध क्वेश्चन जो इसमें नहीं दिख रहा है, आई विल डू इट फ्रॉम दिस वन. फॉर एग्जांपल दैट पोर्तुगीज वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो था, ठीक है. व्हाट वाज इट? विजयनगर, दैट फोर्ट ऑफ भटकल was given to Krishnadev, was given to Portuguese by whom? So Raja Krishnadevaraya, ठीक है. That was also not there in your spectrum. उसके पहले वाला क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है. 2023 का एक पोर्तुगीज का क्वेश्चन था, दैट इज बेसिकली दैट पोर्तुगीज एक्वायर्ड एरिया ऑफ ड्यू फ्रॉम विच रूलर. सो दैट इज बहादुर शाह ऑफ गुजरात. वो भी नहीं दिया हुआ था उस ईयर में, बट इन 2024 व्हाट दे डिड कि अलग से ऐड कर दिया. अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हिंदी से तो कंफर्टेबल हो ना, मतलब आई विल बी यूजिंग लिटिल बिट, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश यूज करते करते बोर हो जाते हैं. सो सी दैट कि जब पेपर में क्वेश्चन आ चुका है तो इट इज इजी टू पुट इट इनटू द पेपर, इजी टू पुट इट इन द बुक. अदरवाइज सो आइडिया इज कि यू मतलब यू डोंट नीड टू गो इनटू फोमो, that fear of missing out, that if you haven't read spectrum. बहुत बार क्या होता है कि that when exam is closer and then if you haven't read spectrum, because बहुत लोग बोल के चले गए हैं तो तुम्हें ये लगता है कि अरे यार मैंने तो पढ़ा नहीं है तो मेरा तो होना ही नहीं है, कि मेरा अच्छा ही नहीं होगा, I will not be doing better in the modern Indian history. Don't be under any kind of impression if you haven't read that particular book. Then, so see that in classes also, that if you have done the classes, that's so good, so fine, ठीक है. If you have read NCERT, that is also good, because इस year के question ऐसे नहीं थे कि जो NCERT से ना हो और किसी और book से हो जाए, या पहले भी जो questions difficult थे, ऐसा नहीं है कि NCERT से अगर जो नहीं हो रहे तो किसी और book से हो जा रहे हैं. So difficult questions were always so difficult that not even NCERT and not even the guidebooks were able to solve it. Then, and in those times, what you needed to consider is कि paper tough है, paper difficult है, cutoff would be low, so it is better to restrain from attempting those questions. Then, so किसी fear में मत रहो. Coming to the next part, that those who are expecting to write this year, some of you, ठीक है, तो जो लोग expect कर रहे हो
rely on what you have studied till now, उसको revise करो, and then rely on answer writing. Answer writing is most important rather than adding something new. क्योंकि prelims के पहले देखो history का section ऐसा section है जो सब लोग पढ़ते हैं, तो बहुत पढ़ा है, ठीक है, हिस्ट्री का सेक्शन तुमने प्रीलिम्स के पहले. तो प्रीलिम्स के बाद यू विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन दोज एरियाज विच आर नॉट टॉट इन और नॉट देयर इन द प्रीलिम स्टेज. सो यू कैन रीड लिटिल बिट मोर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा सा पढ़ लिया, बट उससे ज़्यादा फोकस आई वुड से हिस्ट्री से ज़्यादा फोकस एथिक्स पे रखो, ठीक है, दैट मोर फोकस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी and keep more focus on your optional. Then so give your 80% of time to that, and those sections which you have already studied in prelim stage usko 20% time do. Then so this way you have a plan to clear the exam. So now is discussion ke baad bhi we'll have a little bit, tum jo question puchoge I would just go to into it. तो start करें discussion answers का क्वेश्चंस का. सो 2022 से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ. सो दैट इज, सो आई विल डू वन थिंग. विजिबल है या आई एम ब्लॉकिंग इट? आई विल जस्ट डू वन थिंग. एक मिनट रुक जाओ. आई थिंक ऊपर वाला क्वेश्चन विजिबल होगा हमेशा. वेट 1 minute. Now it will do. So पहला क्वेश्चन देखो. With reference to Indian history, consider the following statements. Then, so consider the following statements. पहला है, the Dutch established their factory / warehouse on the east coast on the lands granted to them by Gajapati rulers. So एक एक करके analysis करते एक एक statement का. So Gajapati, have you heard who are the Gajapati, from which area of the country they ruled? Odisha, ठीक है. So Gajapati were the rulers of the Odisha. Then, and this is a section which comes little bit from the medieval. So when we look at the illustrious or great history of Odisha, so there are some dynasty which I will mention, ठीक है. So सबसे पहले बिफोर द गजपति वर द गंग डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा. देन सो गंग डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा, एंड देन अ सबसेक्ट ऑफ द गंग डायनेस्टी वाज देयर, केसरिया. देन सो गंग डायनेस्टी, केसरिया डायनेस्टी, एंड देन आफ्टर Gajpatis have come to power. Then so Gajapati's timeline was 1435, around 1430 to 1540. So 1430 से लेके 1540 तक, ठीक है. This was their timeline. Got it? And as far as their contribution is concerned, so Gang ruler dynasty, they were the one who started to create the great grand temples of the Odisha. Then so under their patronage, the temple of Jagannath Puri, ठीक है, Konark, these all started to develop. And so as Gang dynasty के बाद Gajapati rulers also immensely contributed towards the Jagannath Puri temple, so as the Lingaraj temple of Bhubaneswar, Konark temple. So these were the two dynasties which were involved with the construction of the Odisha temples. But their timeline ended by 1540. ठीक है. So 1540 में they were completely removed from power. Then now understand 1540 में their rule came to end. Now when it comes to Dutch East India Company, when was the company created? If you have little bit of idea, 1602, 1602 में. Then so Dutch East India Company was created in 1602, and when it came to India, 1605. And which place was the first warehouse of the Dutch in India? Masulipatnam in 1605. So there is a gap, that how come Gajapati were dead when the Dutch have arrived. So यहाँ पे timeline का question है. If you know little bit from the timeline, so then you can eliminate the very first option, that Gajapati's timeline ended before the arrival of the Dutch. Coming to the second one, Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. I hope you all know. ठीक है, ये क्वेश्चन था 2022 का. सो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुरी रूलर, एंड द ईयर वाज 1510. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्फोंसो, हिज नेम वाज नॉट अल्फोंसो. इसमें क्वेश्चन में भी गलत दिया हुआ है, हिज नेम वाज अफोंसो. ठीक है, अल्फोंसो इज
I'll tell you the story of it also, that how it became Alfonso. So his name was Afonso de Albuquerque. 1509 he came to India. He was the second viceroy, Portuguese viceroy in India, and he is considered as the real founder of the Portuguese power in India. So what were his achievements? His achievement was in 1510. He had two achievements. एक तो पहला कि बीजापुरी सल्तनत से he captured Goa, and then also with the help of the Krishnadevaraya, ठीक है, he has got the area of Bhatkal in North Karnataka where he created fort, Bhatkal fort. So that was the question of last year. Now understand, another thing which can be asked in the future year paper is basically that who in India for the first time introduced cannons? किसने सबसे पहली बार तोप इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? Used cannons in India. Who should I give you options? चलो options दे रहा हूं, ठीक है. So options में Portuguese and Babur, just two options. Babur, ठीक है. When Babur came to India? 1517 onwards he started coming, ठीक है. 1517 के बाद he started coming, but he first used cannons in first battle of Panipat in 1526. Then, and Portuguese are arriving in India from what time? From 1498. Then, and Portuguese from 1498, 1499, 1500 onwards itself they have used the cannons. So Portuguese were the first to use the cannons in India. Then they were master of bombarding technology, and they were the first to use, but their usage was through sea route. When it comes to अगर जो एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे कि लैंड रूट पे सबसे पहले किसने यूज किया था, तो दैट वुड बी बाबर. देन सो बट देन if they are asking first usage, so then it will be Portuguese. Then so differentiate between it, and this question could be there, ठीक है. Then coming to the third one, so second question, second statement हमारा correct है. Third is that the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. Then, so when English East India Company created its settlement at Madras, 1639, and in 1639 they got it, this land, they got it leased from the ruler of Chandragiri. And who was ruler of Chandragiri? He was basically a officer of the Vijayanagar kingdom. But by 1640, Vijayanagar kingdom was declining. So Chandragiri ruler, he has declared himself as the ruler of that area. Or Chandragiri officer of the Vijayanagar kingdom, he declared himself as the ruler of that area. So third is also correct. So now you know the answer. It is that 2 and 3. So this is 2022 one. Then let's move on to the, अब इसमें नोट भी करते रहना कि कहाँ कहाँ किस एरिया से. अब एक चीज तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि पिछले 5 साल से यूपीएससी इज आस्किंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पोर्टुगीज. देन दैट दे हैव कंसिस्टेंटली दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पोर्टुगीज. देन 2022 का क्वेश्चन नंबर 2. सो विजिबल. In the Government of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as reserved subject? अच्छा question था, ठीक है. That I would say कि ऐसे देखने में तो easy है, but there is a little bit of trick in it. Then, so in the Government of India, provincial government, ठीक है, reserved and transferred subjects. You remember that diarchy was introduced in the provinces. And diarchy के तहत there were 2 authorities. So these 2 authorities were called as, एक तो popular ministers and दूसरा governor general, ठीक है. So governor general through his executive councillors. Then so अब बताओ मेरे को reserved subject में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है. What all things would be there in the reserved subjects? 1 होना चाहिए या नहीं reserved में? 2 कहाँ पे होगा? Transferred में. Unreserved नहीं होगा, transferred बोलेंगे, ठीक है. 3 कहाँ होगा? 1 में, ठीक है. एंड पुलिस कहाँ पे है? इन रिजर्व्ड ओनली, ठीक है. सो क्लियरली क्लासेस में भी लिखते हो, या अगर जो किसी भी बुक से पढ़ा है, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा है, या फिर देन इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम स्पेक्ट्रम ऑल्सो और बिपिन चंद्रा ऑल्सो, तो इट इज़ वेरी क्लियर. इसमें कोई बहुत मतलब दो राय नहीं है. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस, ठीक है, एंड फिनेंसेस वेर केप्ट इन द रिजर्व्ड सब्जेक्ट. और ट्रांसफर्ड में क्या रखा था? एग्रीकल्चर, ठीक है. देन अच्छा इरिगेशन कहाँ था? लेट मी नो. ट्रांसफर्ड नहीं, रिजर्व्ड.
इरिगेशन वॉज इन रिजर्व सब्जेक्ट बट एग्रीकल्चर वॉज इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ये याद करने वाला सेक्शन था. देन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री वॉज इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ठीक है, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, and so as the finances and administration of justice was kept in the reserved subjects. So this question. Then coming to the third question of the 2022, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, easy है, ठीक है. तो 2022 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. With reference to the proposals of Cripps mission, consider the following statements. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. So just wait for 1 minute, ठीक है. जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो एग्जाम में, तो then and there only you evaluate the statement, ठीक है. You evaluate the statement because whenever the question seem easy to you, there is a very high chance that we commit the mistake. Then so we commit the mistake. So for that you have to evaluate the statement there and then only. And always keep a pencil in your hand. Then एक pencil हाथ में रखो चीजों को underline करने के लिए prelims के paper में भी. So इसमें what I would underline, चलो I will also do this way only. Wait for 1 minute. I'll choose a color which is visible. Orange चलेगा? ये ऑरेंज नहीं है. चलो, that's fine. So the Constituent Assembly would have members nominated, मैंने अंडरलाइन किया, by the provincial assemblies as well as princely states. Then so पूरा ही मैंने कवर कर दिया. So as well as princely states. Then now you see in this part, fine, just give me 1 minute, this would be fine. So provincial assemblies, now it's fine, nominated and princely states. इसमें कुछ गड़बड़ है? Anything which is wrong? Now you just have a look. Nominated पहला है, ठीक है, and it is saying that Cripps mission का proposal याद है? चलो, I'll just revise that Cripps mission proposal, but just after discussing this then. So what was the proposal that Cripps mission first it said that dominion status would be the objective for India, और उसके बाद दिन बोला कि Constituent Assembly would be established to create the Constitution of India. But then the third statement of the Cripps mission was that the members of the Constituent Assembly will be elected from the British ruled provinces and nominated from the princely states. So यहाँ पे provincial assemblies में भी nominated दे दिया है और princely states में, but only one is nominated. So if you look at the objection of the Cripps mission by Congress, so Congress what it said कि why the hell members would be elected from the provincial assemblies and nominated from the princely states, दोनों जगह से elect होना चाहिए. Then so इसमें nomination in the provincial assemblies, that is wrong. Then coming to the second one, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future. ठीक है? So separate agreement with Britain, any province which is not prepared then with future. So this is the right statement, and this is what Congress objected also. So in discussions what we mentioned कि this was a kind of a blueprint of the partition of India. That in 1940 March, Pakistan demand was declared by Muslim League. What Muslim League has said in March 1940 कि that geographically contiguous area in the northwest and in the east are to be separated to create a separate nation Pakistan. And this demand got accommodated कि अगर जो कोई province तैयार नहीं हो रहा है Constituent Assembly जो constitution propose कर रही है उसके लिए, so then they have the separate right to sign their separate agreement with the British authority regarding their future. So that is a blueprint of partition. So that is, so only statement 2 is correct. I would say it both the questions of 2022 were easier questions. अगर जो इसको नहीं कर रहे हो तो then there is basically there is a issue. ठीक है?
that if these questions are not solved, तो then prelims clear करना थोड़ा difficult होगा. Then coming to the fourth question, consider the following freedom fighters: Barendra Kumar Ghosh, Jogesh Chandra Chatterjee, Ras Bihari Bose. Who of the following were actively associated with the Gadar party? I don't think कि ये difficult होना चाहिए तुम्हारे लिए. Difficult है या easy है? Who was associated with the Gadar movement? Ras Bihari Bose. ठीक है? So everywhere you must have read. मैं क्यों ही बोलूँ कि सिर्फ क्लास में पढ़ा है, ठीक है? कहीं पे भी पढ़ोगे तो how you are scoring, पुनीत? कर रहे हो क्लियर? आज पता चल जाएगा. So अंडरस्टैंड, रास बिहारी बोस, जो एक एक करके बता रहा हूं. बरेंद्र कुमार घोष, हु वाज ही? अरविंदो घोष के भाई थे, ठीक है. एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड मेजरली इन द अनुशीलन समिति एक्टिविटीज. So Anusilan Samiti activities, and he was also the editor of the Patrika which was released by Anusilan Samiti. So what was the name of the Patrika? Jugantar Patrika. Then, so he was editor of it, and he was arrested in the case of the Maniktalla bomb making episode. Then, so he was arrested, and 1908 में ही बरिंद्र कुमार घोष को यहाँ से उठा के सेल्युलर जेल अंडमान भेज दिया था, ठीक है. So cellular jail अंडमान भेज दिया था. In fact, he was given death punishment, but his death punishment was saved by Chittaranjan Das. Then Chittaranjan Das intervened and he saved life of the many revolutionaries. So जो death punishment मिला था, that was got converted into the life imprisonment in cellular jail Andaman. So in 1908 he has been sent. When was the Gadar movement? 1913 to 1915. Then second person, Jogesh Chandra Chatterjee. When do we read about Jogesh Chandra Chatterjee? So we read about him when he and Ras Bihari Sachindranath Sanyal, and they have planned about the killing of the Viceroy Hardinge, and we also read about them in 1924. Then, so Jogesh Chandra Chatterjee, he was not involved in the Gadar movement. Ras Bihari Bose was the one. He was called as, there were two Bahrupiyas in Indian histories. Then पहला रास बिहारी बोस को बोलते हैं और दूसरा चंद्रशेखर आजाद. Then, so both of them were called as Behrupiya. Why Behrupiya? Because they were very good in disguising. कि भेस बदल के कहीं इधर छुप जाना, कहीं उधर से अटैक करना. So that was a very beautiful trait of theirs. So Ras Bihari Bose was most successful in it. Then, so Ras Bihari Bose, first he was involved in the attack on the Viceroy Hardinge in 1911. Then उसके बाद then Viceroy Hardinge के अटैक के बाद then he got involved in the Gadar movement. So he was the leader of the Gadar movement in the northwest, because Gadar idea may have started from Canada and US then, but India में execute करने के लिए Ras Bihari Bose was the leader. And then after, when the arrest warrants were against him, he escaped to Japan, and he was there in Japan till the formation of the Azad Hind Fauj. And in fact he was the one who said to Captain Mohan Singh कि Subhash Chandra Bose is the best guy to lead the Azad Hind Fauj. Then, and when Subhash Chandra Bose arrived in 1943, so Captain Mohan Singh gave the entire command of the INA or Azad Hind Fauj to Subhash Chandra Bose. Then, so Ras Bihari Bose was good at disguising, and he was he was never caught by the British authority till his death. So Ras Bihari Bose, only 3 is the answer. Coming to the number ये 2023 का question, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? Easy है ना, इसमें तो तुम्हें कोई difficult. तो Regulating Act, Charter Act of the 1833. So William Bentinck became the first Governor General of India. अच्छा, now tell me that Governor General of Bengal, ठीक है? So does it meant 1773 में ये position create हुआ, Governor General of Bengal. So does it mean that he was controlling only Bengal, or he was responsible for all the territories in India that under the British occupation? All the territories. He was responsible for all the British possession in India, okay? But he was not called as Governor General of India. Then he was only called as Governor General of Bengal. And now, when Governor General of India position has been created, so that was given to William Bentinck, and now he is also responsible for all the territories occupied by British in India. But what is the difference between the two? Difference is, समझना इस बात को,
the Governor General of Bengal position was created, so hardly 10 to 12% of India was under the British occupation. And then by 1819 only, that position became more than 50%. And when William Bentinck has come to power, so he is controlling more than 50% land of India. So now it will be better. So अब 50% से ऊपर जब कंट्रोल कर रहे हो, तो that is a better suited position to be called as the Governor General of India. Then, so that is something which you don't find in the books, but you need to understand it. Then come to the next question, 2023 का, ये difficult question था, ठीक है? इसमें एक part obviously difficult था और दूसरा part easy था. Now understand, so current affair based था, but ऐसा भी current, ये 2023 का question है. Now see, consider the following statement. Statement 1, 7th of August is declared as the National Handloom Day. So this 7th of August was declared as a National Handloom Day in 2016, 2016 में. So during the first tenure of the NDA government. Then, so 14 में government आई, 14, 15 and 16 में, third year. Then, so they declared National Handloom Day. That is quite right. Statement 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Now understand, when was the partition of Bengal declared? 19th of July 1905, ठीक है? So 19th of July 1905 declaration हुआ, but information पहले से था. In 1903 itself, Curzon has made an announcement that Bengal has become too big to be administered together and Bengal needs a division. But उस time पे किसी को ये नहीं पता था कि that British will be dividing the Bengal on the line of the religion. So murmurs were there that Bengal will be divided, but it was not very clear on what line. But in July 19th of July, he declared that this division is on the basis of the religion. And that's how the Swadeshi movement started. Then, so 7th of August, it informally started. And then after Congress session or Congress session ke baad, फिर उसके बाद then other decisions have been taken. So, now understand, this, is it current affair? अब 7th August 2016 को National Handloom Day start हुआ है और 2023 में एग्जाम दे रहे हो, तो डू यू रीड अ करंट अफेयर ऑफ 8 ईयर बैक, 5 ईयर बैक? हम मतलब कितने टाइम तक का करंट अफेयर पढ़ते हो? जस्ट 2 साल का, नॉट मोर देन दैट. देन सो दिस मेक्स इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है? इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, बोथ आर करेक्ट, बट पीपल वर नॉट अवेयर दैट व्हेन डिड दिस वन स्टार्टेड, ठीक है? नेशनल हैंडलूम डे. सो दिस इज इसमें both the statement 1 and 2 are correct and that correct explanation. So इस लिहाज से, ठीक है, from this perspective, another question which I can formulate, अगर जो इस type का question पूछना हो, so when did Gandhi returned to India from South Africa? 9th of January 1915. He returned to India from South Africa. And then government of India very recently तो नहीं बोलूँगा, मतलब in last 2 decades, ठीक है, it's been almost 2 decades then. So government of India to celebrate Gandhi's arrival in India started celebrating प्रवासी भारतीय दिवस. Now अगर जो इसमें क्वेश्चन पूछे तो if they give you, ठीक है, that when did the प्रवासी भारतीय दिवस celebration started, so that will become difficult because you don't know. So it started in 2003 when Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister of India. So 9th of January 2003 it started. So बस ये डेट याद रखना है, 9th of January, और 9th of January तो वैसे भी याद रहता है, 2003. So that could be, अब उसमें ऐसा statement based question they can give you. Then so be ready for these type of question. Then another question of 2023 which I would say ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के में करेक्ट हो सकता है. तुक्का अंडरस्टैंड करते हो? वाइल्ड गेस. देन अदरवाइज, ठीक है, दैट यू विल नॉट गेट टू नो देन कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों, ठीक है, एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट. सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, दे वर एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, वहां पे लिखा हुआ है ना, तो it was actually not important, they were just personalities then. So with reference to the Indian history, Alexander Rea, A.H. Longhurst, Robert Seville, James Burgess and Walter Elliot, 5 लोगों का नाम दिया है, were associated with. So they were all the archaeological excavators, but then their names are mentioned scattered in कहीं एक NCERT में, कहीं अलग NCERT में, और कुछ नाम तो बिल्कुल ही नहीं mentioned है किसी NCERT में. और रही बात
that any guidebook, तो guidebooks तो already they are not, they were kind of bewildered that कि ये क्या नाम है, then कहीं guidebooks में नहीं mentioned है. तो इसमें से if I'm right तो हमने एक्सकेवेटर्स में जो नाम सुने हैं, ठीक है, या जो क्लासेस में पढ़े हैं, या तुम स्पेक्ट्रम में या फिर दिन बिपिन चंद्रा में पढ़ा होगा, तो जनरली वी रीड अबाउट जॉन मार्शल, ठीक है, दयाराम साहनी, देन रखलदास बनर्जी, देन वी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट chairman of the Archaeological Survey of India, who was he? Alexander Cunningham. Then we also talked about Mortimer Wheeler. Then, so these are the names that we come across. Then, इसमें से एक कोई था, मेरा भी नाम मुझे भी थोड़ा सा I think James Burgess or Longhurst. He was the son-in-law of John Marshall. ठीक है? And who was also working with him. Then, तो ये एक difficult question था. You could have left it, ठीक है? You know it or either you know or you don't know. So that is 2023 का question. Now 23 में how many questions were there? Total 3 questions were there. 24 में 4 questions were there. Let's come to 2024 जिसमें सबसे कम नंबर में questions थे. So give me 1 minute. Yes. So now ये interesting question है, ठीक है? Easy but interesting. Read it. With reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. So, I will underline इसमें. पहले मैंने underline किया Cornwallis, ठीक है? Then first statement I am underlining Rayatwadi settlement. Then, so just go with it. Consider the following with reference to revenue collection by Cornwallis. Consider the following statement. Under the Rayatwadi settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Then, so tell me about the statement first. ये statement सही है या गलत है? क्या है? Wrong है. क्यों? Exempted का मतलब क्या होता है? छूट देना, ठीक है? पुनीत बताओ. Is it? This provision was there in Rayatwadi or not? Tha. This provision was there in the Rayatwadi. You guys are forgetting. This provision was there in the Rayatwadi. ये जमींदारी में नहीं था. This was not in the permanent settlement. The one change which was there from the permanent settlement to Rayatwadi settlement was that that in permanent settlement there was no relief to the peasants. ठीक है? In Rayatwadi settlement, partial relief was there. ठीक है? So it depended on the people who are going to collect the revenue, but in the law book, in the rule that अगर जो natural calamity से crop failure होता है तो provision था कि exemption मिल सकता है, ठीक है? It was there. But so though this provision, what is written, this is correct, but at the end of the day it is incorrect. Why it is incorrect? Yes, that is the answer. When did Cornwallis left India? 1793. And when Rayatwadi system started in India? 1820. तो रायतवाड़ी तो कॉर्नवालिस के अंडर था ही नहीं, तो ये कहां से करेक्ट होगा? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई विल टेल यू कि मैं वर्ड तो खराब नहीं यूज करना चाहता, बिकॉज मतलब दैट इज समथिंग बट नी जर्क इंटेलिजेंस ऑफ द मार्केट. जाके देखना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, ठीक है, एंड मतलब आंसर्स जो बनते हैं नेसेसरली दैट इज मतलब किस बेसिस पे, नी जर्क लॉजिक पे बनाते हैं लोग. यू नो व्हाट पीपल डिड दैट जब यूपीएससी ने अपना आंसर रिलीज किया तो लोगों ने इस स्टेटमेंट को गलत करार दे दिया कि नहीं, एग्जेम्पशन नहीं था रायतवाड़ी सेटलमेंट में. किताबों में लिखा हुआ है कि देयर इज ए एग्जेम्पशन, बट देन people they gave the answer that ki, no there was no relief. Everywhere it is written that there is a relief, but there is no relief because UPSC has said that this statement is incorrect. But nobody pointed that why this statement is incorrect, because of the Cornwallis. It was not started by Cornwallis. साफ साफ पूछा है with reference to revenue collection by Cornwallis. You got it? तो next year अगर जो यही पूछ दे, बात समझना मेरी बात, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर जो यही स्टेटमेंट पूछ दे किसी क्वेश्चन में, एंड देन इट इज अ राइट स्टेटमेंट, यू ऑल विल बी मार्किंग इनकरेक्ट बिकॉज द कोचिंग वालाज एंड देन डिफरेंट पीपल हैव सेड कि नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, गोइंग बाय देयर एक्सप्लेनेशन. सो दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है. सो आई होप यू गॉट इट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
Under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. Sunset clause. Then you have studied about it. Then so sunset clause कि जमींदार अगर जो fixed date के पहले पैसे नहीं देता है तो then जमींदारी snatch कर ली जाती थी. And then you have read in outcomes also that कि जो जमींदारी suppose करो कि मेरे पास जमींदारी है तो मुझसे छीन ली गई. Then so it has been snatched from me, but it will be bidded to somebody else, and that what created new class of zamindar in India who were very loyal to the British authority. So पुराने जमींदार को हटा के ब्रिटिश ने नए जमींदार बनाने स्टार्ट कर दिए. So though it seems to be easy question, but I know I interacted with the people. Near about 90% of the people flustered in this question. क्योंकि सबको ये लग रहा था कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों मार दो, ठीक है. ऊपर किसी ने कॉर्नवालिस वो नहीं किया. So and then कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने अलग ही लेवल पे आंसर्स दे रहे हैं. Then so हाँ गलतियां होती हैं, I would say मुझसे भी होती हैं, but I must be humble enough to accept my that mistakes. Then so let's come to the next part. 2024 का question number 2. With reference to the Government of India Act 1935, consider the following. So ये Government of India Act 1935, ये तो समझ में आ रहा है. Consider the following statements. It provided for the establishment of All India Federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. Easy one, ठीक है. पहला प्रोविजन यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, किसी भी किताब से पढ़ लो तो कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन इन्हें बनाना था, एंड दिस ऑल इंडिया फेडरेशन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस एंड द दैट इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. नाउ ये बना कि नहीं बना वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. सेकेंड इज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर. सो अब एक चीज याद करो, ठीक है. 1919 में डायरकी was introduced in the provinces. Then in 1935 what is the status of डायरकी? provinces में है या नहीं है? हटा दिया गया, ठीक है. provincial autonomy was sought to be provided और उसके बेसिस पे 1937 में इलेक्शन हुआ. 1937 इलेक्शंस में टोटल 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर देयर. कांग्रेस की गवर्नमेंट कितनी जगह बनी? 9 provinces. Then so diarchy was removed from the provinces, but where diarchy was introduced? Center. ठीक है. क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? Because ये पहला वाला ऑल इंडिया फेडरेशन could not be created. ये बना क्यों नहीं? There were 2 criterias. What were the criterias? Half of the princely states must give their consent to join the federation, and more than एक और उसमें सब कंडीशन था that in the joining princely states the total population of the joining princely states must be more than the 50% of the total population of entire princely states. दोनों condition fulfill नहीं हुए. So that's why All India Federation was not created, and that central government functioned on the basis of the diarchy. ठीक है. So coming to this part, defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature. So what is federal legislature? That central you can say, ठीक है. So defense and foreign affair that यहाँ पे भी reserved and transferred subjects create हुए, ठीक है. And then these two defense and foreign affairs were there in the reserved subject, and who was controlling reserved subject? Governor General. So defense and foreign affairs were under the control of Governor General, not the federal legislature. So that was the part of the reserved subject. अब एक ट्रेंड नोट करना कि ट्रेंड इज व्हाट कि यूपीएससी, अब ये तो सिर्फ 3 साल का है, अगर जो मैं 15 साल उठाऊं तो आई हैव सीन 5 times क्वेश्चंस ऑन द रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. देन सो व्हाट यू नीड टू बी, जब पढ़ रहे हो तो 1919 में एंड 1935 में यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में कौन क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और कौन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कंट्रोल करता है और कौन transferred subject control करता है. So tell me that who controlled the transferred subjects in the center? Governor General through, see, Governor General Executive Council was controlling the reserved subject, and Governor General Legislative Council was controlling the transferred subject. 1919 में क्या था? In provinces, Governor General Executive Councillors were controlling reserved subjects, and popular ministers were controlling ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. सो ये एक थोड़ा सा क्लैरिटी दिमाग में एक्ट्स को पढ़ते वक्त जरूर होना चाहिए, ठीक है. एंड एज यू कैन सी कि एक्ट से क्वेश्चन इस ईयर नहीं है,
but then rest of the year there are questions from the acts. So इसमें second statement is incorrect, ठीक है, first is fine. Then coming to अब हम अपने इस ईयर का पेपर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इस ईयर का पेपर was easier and your history was savior as I'm saying, ठीक है, time and again. So consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy. Then so Raja Ram Mohan Roy, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, तुम वहाँ से पढ़ो. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. So is it right or wrong? It is very right then, that he often emphasized on the Western education. He often emphasized on the Western values. And in fact, a number of the time we have seen that he appreciated the Western philosophies like that philosophies of the Kant, Hegel, ठीक है, so as that J.J. Rousseau, then some other names, can you take? Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, Voltaire, Montesquieu. So he had a great love and respect towards the traditional Western philosophy. Then he desired his countrymen to accept rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. I think there could not be any easier question than this. Then इसी वे में, अब सब लोगों तो क्लास में नहीं थे, ठीक है, जो लोग हो उनको तो याद होगा, यही लिखा है क्लास नोट्स में कि he believed in the rationality, scientific approach and the human dignity. Then at least ये 3 वर्ड तो क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, लास्ट वाला भले ना हो. So then it was easiest question, इसमें बहुत कुछ करने का नहीं है. इस ईयर का फेवरेट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. देन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से 3 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द civil disobedience. Then so we'll see that where is that. So consider the following subjects with regard to non-cooperation program. So tell me, non-cooperation में boycott of law courts and foreign clothes, is it right or wrong? Right, ठीक है, judiciary को boycott करना था, and so as that foreign clothes. Then observation of strict non-violence, right or wrong? Right. Then retention of titles and honors without using them in public. Retention नहीं था, boycott of the foreign titles था. Everything was to be, this is to be boycotted. So this is wrong option. Then establishment of panchayat for settling dispute. So ये बहुत logical है. पूछो, ये चौथा जो statement है, I'll be very clear on it. ये ना तो किताबों में बहुत clearly mentioned है, ठीक है, और ना तो क्लास में mentioned है, ठीक है, मैंने भी नहीं बोला है क्लास में. But then how you can arrive at it? अगर जो तुम law courts को, judiciary को you are avoiding, तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे? तो लोकल पंचायत के थ्रू. तो आइडिया ही यही था कि जुडिशरी को अगर जो यू आर नॉट गोइंग टू जुडिशरी, यू आर नॉट गोइंग टू द लीगल रूट, सो व्हाट इज प्रमोटेड? दैट डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड थ्रू द लोकल पंचायत, ठीक है, द सिस्टम विच वाज देयर इन इंडिया. सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड, इंप्लाइड मीनिंग से जाना था. देन सो 1, 3 and 4, दीज ओनली 3, ठीक है. तो ये पिछले साल वाला ट्रेंड है, दैट ओनली 2, ओनली 4, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट. देन so 3 of them are correct. Coming to the next question from the non-cooperation. So consider the following statement in respect to non-cooperation movement. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. ठीक है? Is it difficult? So what is Swaraj? See that what was the idea of the Gandhi, ठीक है, that non-cooperation movement was to be that they are not going to cooperate with the British authority, but does it mean that they will be bypassing the law? I think class में जब हम लोग एक डिस्कशन करते हैं तो क्या डिस्कशन करते हैं? What is difference between the non-cooperation and civil disobedience? तो क्या डिफरेंस है दोनों में? Can you tell me? किस में लॉ तोड़ते हैं? Civil disobedience, ठीक है. So when you are breaking the law, so will it be legitimate? Obviously not. It will become illegitimate. So that's what is the difference between the non-cooperation and the civil disobedience. That non-cooperation was legitimate. ठीक है? So peaceful means would be there in all the time, but then non-cooperation was legitimate. ठीक है? So that is right statement. अगर जो इसमें illegitimate देता, तो this would have been a wrong option. Then it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. So now understand, within a year and the government resorted to. So इसमें
you have to understand the story that you have studied, या क्लास में या फिर देन बुक्स में या कहीं पे भी. सो व्हाट इज द स्टोरी? रिमेंबर दैट कहाँ से स्टार्ट होगा इसको करेक्ट करने के लिए. That in January 1922, Prince of Wales he came to Bombay. ठीक है? Remember? I hope थोड़ा बहुत याद होगा. And when Prince of Wales he came to Bombay, so there was a violence on the street. So there was a violence on the street, and then what happened? When the violence was on the street, so Gandhi observed 1 week fast to control the violence. But उसके एवज में गवर्नमेंट ने क्या किया? Government arrested large number of the Congress functionaries. Then, and when government arrested large number of the Congress functionaries, so what Gandhi said to the government? Gandhi threatened government. He said that if political prisoners are not released within 1 week, so then Congress will go for civil disobedience from Bardoli. Okay? So now, is this a statement correct in that regard? That it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes. In the next stage only did not come within a year and government resorted to repression. So, government has resorted to repression because it has arrested people and Gandhi threatened. Next stage would be the breaking of the law. So that is also a right statement. Okay? So see that there are some things, there are few statements that you have to arrive, that you have to visualize through the stories that you have seen. Uske basis pe you can correct it. ठीक है? So इसमें already you know the answer done. So both the statements are correct. Then now the 2025. This is the ये वाला question. ठीक है? No. This one. ठीक है? So this is from civil disobedience movement. Understand? Sedition has become my religion was the famous statement given by the Gandhi at the time of Champaran, publicly violating salt law at Dandi, attending the second roundtable conference in London and the launch of Quit India movement. So we will have to evaluate from the beginning. ठीक है? अब second roundtable conference, when did Gandhi attended? 1931. ठीक है? In 1931 he attended it in London. Then and उसके पहले and Quit India was 8th of August 1942. Champaran Satyagraha was in 1917. And when was the publicly violating salt law at Dandi? 6th of April 1930. ये dates मैंने बता दी. ये dates भी difficult नहीं है, you know it. So when we talk about the Champaran Satyagraha, was Gandhi arrested in Champaran? ठीक है? पहला तो यही करो. ठीक है? कि ये सोचो कि was Gandhi arrested in Champaran? Obviously not. Then you already know the details. कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको बोला था कि डिस्ट्रिक्ट में एंटर मत करो, बट देन ही did not obeyed it, and then he went ahead with the investigation, and his investigation created a positive impact. Then so Gandhi was not arrested in any of it. Then when did Gandhi was arrested? So Gandhi's arrest was after Chauri Chaura incident. ठीक है? 1922 when Gandhi called off that non-cooperation movement after Chauri Chaura incident. So then he was arrested on the charges of sedition. Okay? So for the first time Gandhi's arrest on the charge of sedition was 1922 in India. Then अब उसके बाद next event क्या है? ध्यान से समझना. बीच का event he is in jail. ठीक है? Pro changer no changer phase चल रहा है. Then Simon boycott. Then Simon boycott के बाद then Purna Swaraj declaration in Lahore, and then Congress has given him permission to initiate the civil disobedience movement. So now remember, Gandhi started his salt march from Sabarmati ashram to Dandi coast. So Sabarmati in Ahmedabad and Dandi is 470 something kilometer from Ahmedabad on the coast of the Gujarat. He started on 12th of March, he reached to the coast of Dandi on 6th of April. He took handful of salt in his hand and he said that it is the crime against God and humanity to submit any longer before the British authority. So this is where he has broken the law. And then when somebody has asked to him, so then he said that sedition has become my religion. कि पिछली बार मैंने कुछ नहीं किया तो भी मुझे sedition के charges थे. तो इस बार तो I'm going to do it. So it was this publicly violating salt law, because sedition, if statement will be made when he is publicly violating the, and उसके बाद वाले जो हैं second round table conference and then other things, ठीक है, that can easily be avoided because the first part you have to go with. Then 2025 का next question, this is also related to non-cooperation movement. चौरी चौरा हम बात ही कर रहे थे, आ गए इस पे मेरे से भी एक mistake हुआ था, I'll accept to it. Then so
who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident. So I'll tell you a few things because I belong to the place where Chauri Chaura is, ठीक है, तो गलतियां वहीं से होती हैं जहाँ. So C.R. Das died in 1925, ठीक है, and C.R. Das अभी छोड़ देते हैं. Madan Mohan Malavi ji was a very popular leader of this area, ठीक है. He was very popular leader of this area. In fact, that he was one of the very popular engineering college of UP is named after him, Madan Mohan Malaviya Engineering College in Gorakhpur. Then, and Chauri Chaura is also in the Gorakhpur district of the UP. Then, so Madan Mohan Malavi ji, he completed his legal education from Allahabad University, ठीक है, but actually he was more into academics rather than in the this law profession. So in 1911 itself he has left his profession of the law. Then, but जब ये incident गोरखपुर district में ही हुआ, so 170 people were arrested and put into jail. So that is the last time that he has donned his hat of the law, that lawyer, and then after he defended people. So he was able to save the life of 155 people, ठीक है, और basically 155 people were saved from getting arrested and 15 people जिनको death penalty मिली थी उनका imprisonment में, life imprisonment में conversion करवा दिया उनके punishment को. So इसमें issue क्या था, कभी कभी बहुत जानना भी issue होता है, ठीक है. So what is बहुत जानना, that everybody, that those who have studied, they will get to know कि Madan Mohan Malvi is correct option, ठीक है. The only confusion was Krishnakant. Who was Krishnakant? Actually, so if in exam situation when you read the question in haste and if you have little bit of more knowledge, so you will get to know Krishnakant was the 10th Vice President of India. He was 10th Vice President of India who was born in 1927. He participated in the Quit India movement, but ठीक है, and he died very recently also in 1990s itself he died. Then, so now understand, if you know the Krishnakant, so then after ये लगेगा कि ऑप्शन इनकरेक्ट है. मदन मोहन मालवीय तो करेक्ट है, बट कृष्णकांत साथ में है तो इनकरेक्ट है. बट यूपीएससी प्लेज अ गेम विथ आवर ओन माइंड्स. देन आई विल टेल यू, कृष्णकांत इज नोवेयर मेंशन्ड इन एनी ऑफ द हिस्ट्री बुक्स, ठीक है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज कृष्णकांत, ओनली ए, ठीक है. सो इफ यू नो टू मच यू विल, ज्यादा जानते हो तो इसको इनकरेक्ट कर दोगे, ठीक है, कम जानते हो सही कर दोगे. तो कृष्णकांत, एंड हु वाज दिस कृष्णकांत, ही वाज नेफ्यू ऑफ मदन मोहन मालवीय. तो इनके बारे में कहीं इंफॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है, ठीक है. अब भले यूपीएससी ने एग्जाम में पूछ लिया तो मीडिया पे सब जगह आ जाएगा कि हु वाज कृष्णकांत. सो ही वाज नेफ्यू ऑफ मदन मोहन मालवीय हु वाज इन्वॉल्वड इन द जर्नलिज्म इन दोज डेज, एंड देन मोर ओवर ही वाज हेल्पिंग मदन मोहन मालवीय ड्यूरिंग दिस टेन्योर. सो इसका आंसर मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत होगा. बट देन समटाइम्स व्हाट आई एम ट्राइंग कि क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है. दैट ओवर, ज्यादा दिमाग, बोलते हैं ना कभी कभी कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, गलती हो सकती है. तो वो मेरे साथ हुआ, ठीक है. आई फेल्ट दैट ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड C.R. Das was, he was providing the legal support, but then not in a way that Madan Mohan Malvi ji has done, ठीक है. तो he has given him ideas, but then he was not directly involved. बाकी क्विक आंसर्स तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मैटर ही नहीं करते हैं, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, subsequent to which one of the following events Gandhi ji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. अब this I want from you. बताओ मेरे को, बहुत मतलब मेरे हिसाब से easy question है, but तुम्हारे हिसाब से है या नहीं है. Pune Pact, ठीक है. So why Pune Pact? What happened in Pune Pact? What is the background of it? Pune Pact का background पहले बताओ. Communal Award 1932 declared by Ramsay MacDonald, ठीक है. So Ramsay MacDonald, British Prime Minister, he announced communal award for the depressed classes. What is this communal award? कि going by the communal award that depressed classes, meaning that untouchable classes of India will be treated as minority and they will be entitled separate electorate. So अब यहाँ पे क्या हुआ कि this is happening after the second round table conference. अब गांधी जी इस पे offended थे
and then Gandhi saw it as a attack on the Indian unity and nationalism and to further divide the Hindu society. So what he declared, fast unto death. So Gandhi ji declared fast unto death, Amarad Angshan, against it. Now that representative of the depressed classes, Dr. B.R. Ambedkar, he had no other option than to meet Gandhi, okay, and accept Pune Pact. So why Ambedkar accepted Pune Pact? Pune Pact में क्या है वो देखेंगे बाद में. The reason is कि Ambedkar believed that what if the death of Gandhi happens? Then, if the death of Gandhi happens, so then people will blame the depressed classes, untouchable people, for the death of the Gandhi, and there will be mass killing of the untouchable people. So just to avoid the mass killing of untouchable people, he agreed for Pune Pact. So what Pune Pact did? It abandoned the demand of separate electorate, and now more reserved seats were to be provided to the people of untouchable classes in the provincial assemblies and so as in the center. Okay? So this was the Pune Pact. And after that, Gandhi has created an organization, Harijan Sevak Sangh. Okay? So Harijan Sevak Sangh, what was it? So that's what is written in that, कि Gandhi wanted eradication of untouchability, and उनके सारे political and social program में untouchability upliftment program was included. He started to call the untouchable as Harijan. Harijan means that कि they are the sons of the gods. Okay? And he also released a newspaper, that magazine with the name Harijan. Okay? So this is what. So Pune Pact के बाद, now ये वाला तो ये तो मेरी YouTube चैनल देखना था इसको करेक्ट करने के लिए. क्लास में तो वैसे भी पढ़ाता हूं, बट क्लास में लोग भूल जाते हैं. यस यस, पिछले साल भी बोला था और मैं 3-4 साल से प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इसको याद करो. नेटिव प्लांटेशन हर ईयर है. इनफैक्ट ये नेटिव प्लांटेशन का एक क्वेश्चन दिया, लास्ट ईयर का क्वेश्चन इनको डालना चाहिए था. मैंने एक्चुअली ये लिस्ट मांगा था कि मुझे 22 से 25 के सारे क्वेश्चंस दे दो. इसमें पिछले साल वाले भी नेटिव प्लांटेशन डालना था. मैं 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग को इसमें से देख के आई टेल यू कि नेटिव प्लांटेशन के क्वेश्चंस आ चुके हैं. एंड एक 2019 में क्वेश्चन था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं. ठीक है? 2019 का क्वेश्चन था, which one of the following groups of the plants was domesticated in the new world and introduced into the old world? So domesticated in the new world, what is new world? New world is basically North America and South America. ठीक है? And old world is Europe and India. Then तो एक क्वेश्चन ये था कि ये प्लांटेशन का, और उसमें क्या ऑप्शंस क्या क्या थे? टोबैको, कोकोआ एंड रबर. ठीक है? देन टोबैको, कॉटन एंड रबर, कॉटन, कॉफी, सुगर केन, रबर, कॉफी एंड वीट. सो आंसर करें, चाहते हो डिस्कशन करें इस पे? एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं. नीचे से मैं चलता हूं. ठीक है? ऑप्शन डी से, वीट. सो any idea that where in which part of the world wheat first originated? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन सॉल्व, मतलब ये ज्योग्राफी वालों को पता होना चाहिए. Wheat originated from steppes grassland. Then so the grasslands of the Asia. So Asia is what? Old world. तो ऑप्शन डी हटा दो. वीट खत्म हो गया, कॉफी और रबर को छोड़ दो. बट कॉफी भी अगर जानना चाहते हो तो टेल मी द कॉफी नेटिव प्लांटेशन ऑफ द दैट कॉफी वाज बेसिकली दैट न्यू वर्ल्ड, बिकॉज अफ्रीका आल्सो कम्स अंडर द न्यू वर्ल्ड. एंड सो कॉफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री? अगर जो साइंटिफिक नेम पता है तो सॉल्व हो जाएगा. कॉफिया अरेबिका. अरेबिका इज व्हाट? अरब वर्ल्ड. इथियोपिया एक्चुअली. देन रबर, हेविया ब्राजीलियंसिस. देन सो साइंटिफिक नेम अगर जो पता हो तो हो जाएगा. ब्राजीलियंसिस. व्हाट इज ब्राजीलियंसिस? ब्राजील. देन तो इट मींस कि इट इज फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड. बट इसमें एक कॉम्बिनेशन वीट जो है वो एशिया का है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सेकेंड वाला, कॉटन, कॉफी एंड सुगर केन. इसमें कॉटन के बेसिस पे हटा दो. कॉटन इज नेटिव प्लांटेशन ऑफ इंडिया. कॉटन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कहां पे? मेहरगढ़, बलूचिस्तान. ठीक है? तो दैट इज ओल्ड वर्ल्ड या न्यू वर्ल्ड? ओल्ड वर्ल्ड. हटा दो इसको. टोबैको, कॉटन एंड रबर. फिर से वापस से कॉटन. ठीक है? तो इसको हटा दो. टोबैको, कोकोआ एंड रबर. नाउ दिस इज करेक्ट. ठीक है? सो टोबैको ऑल्सो केम फ्रॉम द दैट ओल्ड वर्ल्ड, सॉरी न्यू वर्ल्ड. कोकोआ इज घाना. ठीक है? सो कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है, इट केम फ्रॉम घाना. एंड रबर ब्राजील. सो देखो सब ना एनालाइज करना होगा.
लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज मोर ऑफ अ फैक्चुअल थिंग, इट्स नॉट मोर ऑफ अ फैक्चुअल थिंग। जिस तरह के यूज क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, फैक्ट्स तो जानना ही होना चाहिए, बट तुमको एक एक ऑप्शन का एनालिसिस करना होगा, ठीक है। देन लेट्स सी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इसमें इन लोगों ने डाल नहीं रखे हैं, बट देन नेटिव प्लांटेशन एवरी टाइम यू नीड टू रिमेंबर। देन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या था, रेड सैंडर्स, ठीक है। सो रेड सैंडर्स इज व्हाट, लाल चंदन। देन सो इट इज नेटिव टू इंडिया और नेटिव टू आउटसाइड इंडिया। इफ यू हैव सीन द मूवी पुष्पा तो पता चल जाएगा कि इट इज नेटिव टू इंडिया। पुष्पा देखा है ना, 1 और 2, क्या है कहानी पूरी की पूरी, दैट लाल चंदन। इफ यू नो अबाउट द वीरप्पन, ठीक है, ही वाज द तस्कर ऑफ द लाल चंदन ओनली। देन so sometimes you do get question answers from what you are seeing, ठीक है, कि मूवीज भी देख रहे हो तो वहां से भी पता चल जाता है। so now all of it, ठीक है, चलो I'll play YouTube से वीडियो, तो प्ले करके तुम खुद देख लो, मेरे इसमें ये कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो यू कैन सी कि इस बेसिस पे मैंने वीडियो बनाए थे, ठीक है। अब उसमें कुछ और कमोडिटीज जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के लिए हो सकते हैं, यू मस्ट सी इट। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द वीडियो, देख लिया है ना, ठीक है। शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी था, और पोर्तुगीज का पूरा हिस्ट्री आई हैव कवर्ड फ्रॉम गोवा इटसेल्फ, ठीक है, गोवा जाके उसको कवर किया था ताकि थोड़ी ज्यादा ऑथेंटिसिटी हो। तो उसको फिर से एग्जाम जब भी लगे टाइम तो देख लेना, एंड कुछ एडिशनल अगर जो तुम्हें लगता है कि उसमें से लिखने लायक है तो यू मस्ट राइट इट इन योर नोट्स या बुक्स जहां पे भी। और कमोडिटीज तो पक्का से लिख लो, ठीक है, दैट व्हाट ऑल कमोडिटीज वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज। सो एडिशनल वन विच आई हैव कवर्ड इन इट एंड दैट मे बी आस्क्ड इन द सम अदर ईयर्स इज द फ्लावर मैरीगोल्ड, ठीक है। गेंदे का फूल was not native to India. गेंदे का फूल was brought by the Portuguese only. And surprising is that गेंदे का फूल is that first it was offered to not any Hindu deity or in any Muslim mazar, but first it was offered inside the church where bomb Jesus of Basilica in Old Goa. Then so Old Goa में first time it was used, and then after it became part and parcel of the Indian marriages, Indian celebration, Indian Hindu worship, Muslim worship, ठीक है, everywhere Buddhist worship. So then it became part and parcel of it. Then but उसके पहले नहीं. I hope you got it, ठीक है। तो अब this is something related to the question. अब questions में हम क्या theme note down कर पा रहे हैं? So I'll tell you, ये तो 4 साल का पेपर मैंने डिस्कशन किया है, बट आई टेल यू थीम, अगर जो चाहो तो इसको थोड़ा सा ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस का बता रहा हूं, दैट फ्रॉम विच सेक्शन दे हैव आस्क्ड। सो टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन लास्ट 11 ईयर हैज बीन 11 ईयर का टोटल, सो इट हैज बीन 73, तो 11 साल में 73, जिसका मतलब ये होता है कि 6.5 क्वेश्चन एवरी ईयर फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, 6.5 और 6.7। देन इसमें 6 क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड गोइंग टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, out of 73, 15 question from this part, which means that every year you can expect at least 1 and 1.5 question from the policies. Then स्वदेशी मूवमेंट से 5 क्वेश्चन थे, गांधीयन फेज से पहले इस साल का छोड़ के इस साल 5 क्वेश्चन है और इसके पहले 8 क्वेश्चन थे, तो टोटल 13 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, गांधीयन मूवमेंट से। देन ट्रांसफर ऑफ पावर से 3 क्वेश्चन थे, देन पेजेंट रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिविलियन से दैट स्टैंड्स 2 क्वेश्चन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से पहले, ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, पहले 5 क्वेश्चन थे, इस ईयर एक और क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, वो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सो 6 क्वेश्चन फ्रॉम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, देन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन 6, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन 3, अभी एक ऐड हो रहा है 3, एंड देन वर्किंग क्लास मूवमेंट से 4 क्वेश्चन। सो दीज वेर द sections, and on the basis of it you can prioritize that what all questions were there, sorry, that what all sections you can prioritize। and एक और description दे रहा हूं कि number of the questions, ठीक है, just give me 1 minute। so अभी तक सबसे ज्यादा जो मॉडर्न में क्वेश्चन आए हैं that is 13 from 2018,
So in 2018 13 questions were asked, and then सबसे कम number question 2024 that is 2 questions. इस ईयर फिर वापस से 8 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है. सो दैट इज़ वन अनदर डिटेल. उसके अलावा आई डोंट हैव एनी अदर डिटेल. सो एक लास्ट क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक एट इट. देन इट वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट where? Tamil Nadu, Periyar, E.V. Ramaswamy Naikar. And then he also became a very father figure kind of thing in the Justice Party. He changed Justice Party to a social organization, Dravid Kadagam. And later on, under the leadership of Annadurai, Dravid Kadagam became DMK, Dravid Munitra Kadagam. So these were the questions. Up now, let's have a discussion related to the things which are basically कि next, give me 1 minute. Fine. So इसमें I would not suggest, मतलब अगर जो ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये अपलोडेड है ओपन रिसोर्सेज में और नॉट. एनी आइडिया? दिस 10 ईयर पेपर देखने अपलोडेड है ना, तो अपलोड को ही यूज़ करो, ठीक है. खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपलोड को ही यूज़ करो. बिकॉज अच्छे से डाइग्राम्स एंड देन फ्लो चार्ट एंड सब कुछ बना के किया है, तो 10 ईयर पेपर के लिए विजन का ही ये यूज़ करो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है. डाउनलोड करो, उसको यूज़ करो. नाउ व्हाट वुड बी योर अप्रोच, ठीक है, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स. अब इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं कि व्हाट वुड बी योर अप्रोच. दैट सम ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू राइट मेंस दिस ईयर. ऑलरेडी आई मेंशन कि इस सिनेरियो में एनीबडी हु हैज़ टेकन एडमिशन इन मेंस एडवांस बैच जो कल स्टार्ट हुआ है? नोबडी. बिकॉज यू आर अ फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट, तो देर इज, आई डोंट थिंक दैट कि देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर यू, बट दोज हु आर नॉट द फाउंडेशन कोर्स दे कैन टेक द एडमिशन. सो उसमें मेंस एडवांस बैच में 7 से 8 क्लासेस हैं, कुछ मॉडर्न के, एंड 5 क्लासेस हैं आर्ट एंड कल्चर के. सो सी दैट थीम्स ऑफ मेंस एडवांस बैच इज बेसिकली लिटिल एडवांस्ड. देन that it is more of a answer writing approach and then flowchart approach, then whereby we just कि हम ये मान के चलते हैं कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, you have done your foundation, and on the basis of it we do the value addition and we further guide you to that how you'll be incorporating the things in the that question paper. So जैसे last year का notes में टेलीग्राम पे देखना, मैंने अपलोड किया था जो मैंने मेंस एडवांस में पढ़ाया था, ठीक है. So I covered a topic in art and culture, contribution of Cholas and Pallavas. Exactly the same question was there in the paper, that contribution of Cholas and Pallavas. Then, so उस class से भी help हुआ, ठीक है, कि जो तुमने ऐसे पढ़ा है. So now, in the mains stage of exam, so in the mains stage of exam, that since you joined later, some of you joined later, I am once again repeating that you have already studied a lot during the prelims time, so you just need to quick brush up what you have studied, but then you will only be doing the answer writing at this point of time. And those who are not expecting the results this year, या जो this exam दिया नहीं है, next year लिखने वाले हो, what you will be doing from here onwards? Any strategy? कुछ बताओ मेरे को. तुम बताओगे, it will be dialogue, then only I'll be able to contribute to you from my own what is my experience and then what I have seen. So see, अच्छा चलो मैं question के form में पूछता हूँ, ठीक है. That would you be going ahead with your GS paper at this time if you are not writing mains this year? So will you be going ahead with your GS papers or optionals? What should be the better strategy? Optionals. Then so do one thing, that from this time onwards, if you are very clear, 1-2 दिन में clear हो जाएगा, आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा, तो यू विल गेट टू नो कि यू आर क्लियरिंग एग्जाम और नॉट. एंड इफ यू आर नॉट इन दैट फेज, सो देन स्टार्ट विथ योर ऑप्शनल्स. एंड इन योर ऑप्शनल्स व्हाट यू विल बी डूइंग, सी दैट यूपीएससी इज डिफिकल्ट एग्जाम फॉर दोज हु आर नॉट डिटरमिन्ड टू गो थ्रू द लास्ट 10 year paper. It is a very easy exam if you are very determined to solve the last 10 year paper, and in your optional it works perfectly. And so what do I mean by solving last 10 year paper is basically that go through the last 10 year paper and you will not be using any that technological device, ठीक है, कि चैट जीपीटी खोल के बोल दिया कि सब क्वेश्चन को क्लब कर दो, ये कर दो. दैट विल बी इजी टास्क. देन अभी तुम्हारे पास टाइम है, टेक अ पेन, ठीक है, एंड अ पेपर,
write with your own hand. Suppose that you have, some of you have pol science, some of you have anthro, some of you have sociology, then so depending on your optionals, then go through the syllabus, paste your syllabus in front of your table, and then after pick a topic number 1. Okay? In topic number 1, just write all the questions which has been there in last 10-year paper. Do this exercise for all the parts of the syllabus, and then after pick the topic, okay, according to your own convenience. There you can jump, okay. If you want to pick Karl Marx first, do the Karl Marx. If you want to pick Weber first, you do the Weber. If you want to pick Malinowski in anthropology, do that. But us topic say now you are writing the answers, and what you are writing, suppose that you are writing that एक ही theme पे हो सकता है 3-4 बार question आया हो. So when you are writing the answer, so here you don't need to be concerned about the time कि time frame में लिखना है, यहाँ पे time ज़्यादा ले लो, and try to write the best of answer. You use your books, you use online devices, everything. Try to write the best of answers. And suppose once you have written the answer, next day you read that answer. If you're not satisfied with the answer, write it again. Then, so what is needed is to create perfect answers for each and every question. And if you are able to do that, I have seen it with, I would not just inflate the numbers, then I would tell you the real data. Thousands of the people I have seen it who have done this exercise, definitely they were there in the list. So nobody can stop you from getting less than 280 in a difficult paper, and in moderate paper you will always get 300 in your optional. So your optional is key to the success. इसको कभी फॉरगेट मत करना. ऑप्शनल के बेसिस पे लोग बहुत आगे कुछ कर जाते हैं, ठीक है. बट जीएस के पेपर में यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस, बट दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल. देन व्हाट अबाउट द पीपल हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर? यू ऑल्सो हैव टू गिव अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू योर ऑप्शनल. सो ऑप्शनल का सिनेरियो ये होना चाहिए कि 50% ऑफ योर टाइम वुड बी ऑप्शनल एंड 50% ऑफ टाइम फॉर द जीएस. तो ये डिवीजन कंफर्म अपने दिमाग में रख लो, भले वो 1000 मार्क्स का है, ठीक है, बट देन ओवर हियर यू नीड टू गिव 50% ऑफ टाइम. एंड वो जीएस वाले 50% टाइम में विच सेक्शंस यू विल बी डिवोटिंग मोर. देन सो फॉर एग्जांपल दैट एथिक्स पे डिवोट कर लो, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी पे डिवोट कर लो, ठीक है. देन पेपर 3 में बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे पेपर 3 इज अ ट्रैजिक पेपर. That if I go through last 11-year paper, so it is a tragedy for many people every year, ठीक है. एक आध साल कभी पेपर इजी हो गया, but 8 to 9 years paper 3 had been most difficult one. So you have to be very well prepared for the paper 3. Then paper 2 also. Paper 2 में एक tendency क्या है, that paper 2 में the question used to be very long in polity paper. Question itself seems to be essay, but then answers are always very simple, okay. So keep this in mind that questions may seem difficult to you, but answers would be quite comfortable. And then if you have good understanding of the international relations or international current events, so then paper 2 is going to benefit, okay, that give you benefit. Paper 1 में, paper 1 थोड़ा बड़ा section है, ठीक है, क्योंकि paper 1 में जो syllabus है that is very wide. भले पेपर 250 नंबर का है, बट सोसाइटी इज देयर, ठीक है, ज्योग्राफी इज देयर, देन ऑल द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सो syllabus is little wider. So now here you can do the smart preparation, ठीक है. अब what is smart preparation? When I look at, तो कुछ सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से ओवरलैप होते हैं. तो इफ यू आर गिविंग मोर टाइम टू सोसाइटी पेपर, सोसाइटी एस्पेक्ट, योर चांसेस आर वेरी गुड टू फेच मोर मार्क्स इन द पेपर 1. बट इफ यू आर नेग्लेक्टिंग सोसाइटी इन पेपर 1, सो चांसेस आर कि दैट यू विल बी गेटिंग लेस मार्क्स इन इट. मतलब डिस्पाइट आई बीइंग द टीचर ऑफ द हिस्ट्री, आई वुड से दैट कि सोसाइटी से मार्क्स तुम अपलिफ्ट कर सकते हो, बट हिस्ट्री इज अनप्रेडिक्टेबल. So art and culture, if you have studied from me, you will be best in the market. मतलब ईगो के साथ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इट इज मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड देन प्राइड के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब आई जस्ट टेल यू, आई टीच यू इन 17-18 classes and I have heard, I have seen, I have witnessed in the market that people just go through the 4 classes. तो 4 क्लास में पढ़ना और 17 क्लास में पढ़ना ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है, ठीक है. तो तुम बेटर प्लेस्ड हो.
अगर जो तुमने यहाँ से नोट्स किए हैं तो तुम बेटर प्लेस हो. आर्ट एंड कल्चर इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, मार्क माई वर्ड्स, nobody will be able to solve. Then so you are better placed. Modern Indian history is something कि उसमें कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, ठीक है, because whatever you have studied in the prelims that will come handy. World history में now let's have a look at it. World history में if you are short of time, so what you can do that revolution सारे पढ़ लो, जितने रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ जापान एंड इटलीज यूनिफिकेशन. सो दीज थीम्स, ऑल द रेवोल्यूशंस एंड इटलीज यूनिफिकेशन एंड देन जर्मनी पार्ट ऑल्सो. if you have done it, that's fine. And the second part is World War I and World War II. So only you cover this much, ठीक है, definitely you'll be better placed in the exam because world history syllabus is little wider. So if you get concerned about world history syllabus, that will not help you. इन themes को पहले कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद दिन whatever themes are there एक बार पढ़ के छोड़ दो. So होना होगा तो वो हो जाएगा. वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है. सो इन लास्ट 11 year पेपर दैट देयर हैज़ बीन हार्डली 8 questions from the world history. So it means that every year consistently they are not asking questions from the world history. Last year there was a question. So इस year expectation है कि हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है. तो what about the post independence? So post independence in last 11 years they have asked just 4 questions. ठीक है, जस्ट 4 क्वेश्चंस एंड 3 वर आस्क्ड इन 2013 और एक पिछले साल पूछा था. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट देन इफ यू हैव क्लास नोट्स ऑफ विजन जिस भी टीचर ने पढ़ाया हो, ठीक है, तो उसी को बेस रखो. डोंट गो विथ एनी बुक, जस्ट रिवाइज द क्लास नोट्स, देन दैट विल बी एनफ टू राइट अ आंसर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इफ इट कम्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इन वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो एंड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो. सो जस्ट डू दैट. इसमें 2 से 3 दिन लगा दो, उससे ज़्यादा टाइम मत लगाना. ज्योग्राफी इज अ सेक्शन दैट वेयर यू कैन फेच एक्स्ट्रा मार्क्स. देन सो ज्योग्राफी अच्छे से, चूंकि प्रीलिम्स में भी पढ़ा है, तो उसको बस ब्रशअप करना है, ठीक है, ब्रशअप करना है. एंड देन कभी कभी once in a while some of the questions in the geography are difficult. For example, last year there was a question called twisters, ठीक है. So there was a question called twisters. Have you seen that question? मेंस में इस ईयर के पेपर में 2024 मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार अपने फ़ोन से पढ़ता हूँ, ठीक है. तो उसमें या फिर मैं माधव का सेशन लगा दूंगा, तुमको उससे ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है. सो गिव मी 1 minute. I'll just give me 1 minute. Twister question in mains. मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन काइंड ऑफ क्रिएटिंग द आंसर ऑफ इट. सो नाउ क्वेश्चन इज, what is a twister? Why are the majority of twisters observed in the areas around Gulf of Mexico? ठीक है, आंसर कहाँ से बनेगा? ट्विस्टर से नहीं, गल्फ ऑफ मेक्सिको से, ठीक है. बिकॉज इन ज्योग्राफी यू रीड अबाउट द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है. ऊपर की तरफ फ्लोरिडा, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, साउथ अमेरिका, एंड दैट इज व्हाट वेयर इज द that basically that Gulf of Mexico. So Gulf of Mexico if you have read about, तो उसमें hurricanes पढ़ा होगा, tropical that hurricanes and then what you call that, I'm forgetting the name, ठीक है, Katrinas, ठीक है. So yes, so what you are saying? Tornadoes, yes, very good, ठीक है. So tornadoes, बस write the features of it, ठीक है, write the feature of the Gulf of Mexico, ठीक है. अगर ट्विस्टर नहीं समझ में आ रहा है तो राइट द फीचर ऑफ इट. एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई वुड से अपने क्लासरूम स्टूडेंट थे माधव, ठीक है, रैंक 17, उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि उसको पता नहीं था माधव को कि कैसे लिखना है, बट ही जस्ट दैट बिल्ट अराउंड इट कि वो बाकी का क्वेश्चन पढ़ के उसने आंसर लिखा और बहुत अच्छा आंसर लिखा, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू हाउ टू मैनूवर द आंसर, देन तो वो फॉलो कर सकते हो. बाकी ज्योग्राफी में अपना वही अप्रोच रखो दैट व्हाट यू हैव स्टडीड जस्ट ब्रश अप द थिंग्स, देन रिवाइज इट. बट देन those areas which are mains specific only, not in the prelim syllabus, give a little bit of more importance. Then so go ahead with this all strategy, and answer writing is the key. If you write more answers, then if you write more answers it will be all fine, ठीक है.
सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अब तुम पूछ सकते हो मेरे से, बताओ कुछ पूछ रहे हो? और किसको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछना है कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? एनीवन? अच्छा, यू हो। सो कुछ फर्स्ट आई आस्क यू, क्या पढ़ क्या रहे हो? मतलब अभी इस ईयर के लिए क्या पढ़ा था? एनसीईआरटीज पढ़े थे, ठीक है। एनसीईआरटीज क्लास 6 से 12 तक, 9th वाला पढ़ा था, 10th वाला। 9th और 10th में कुछ चेंज होने वाला है। अभी मैं क्लास में आने से पहले आई वाज चेकिंग द एनसीईआरटी वेबसाइट। सो नई वाली अभी अपलोड नहीं हुई है, बट देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि विद इन मंथ और 2 द न्यू विल कम। तो वेन एवर द न्यू विल कम, जस्ट गो थ्रू इट कि उसमें क्या चेंजेस हैं, वो चेंजेस पढ़ लेना। देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, क्लास 12th है ना, सो क्लास 11th और 12th, सो रीड दैट। एंड उसके अलावा उसके अलावा आई वुड से कि कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है? एनी ऑफ यू? इफ यू आर रीडिंग दैट्स फाइन, बुरा नहीं है कोई भी किताब। देखो हिस्ट्री इज अ स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। सो जो ऐसा नहीं है कि बिपिन चंद्रा में अलग हिस्ट्री लिखी है और स्पेक्ट्रम में अलग लिखा है और विजन में कुछ अलग लिखा है। एवरीवेयर इट विल बी सेम, only thing is the difference of the language, ठीक है, and then moreover the coverage. So spectrum used to be little thinner, ठीक है, till 2017 it was 390 pages and now it has become 1000 pages. तो स्पेक्ट्रम को देखते हुए ऐसा लगेगा कि सिलेबस ही चेंज हो गया है इसीलिए इतना पेजेस बढ़ा दिए, बट सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं। 1947 से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वही सिलेबस है जो अभी तक है। देन तो ऑब्वियसली on expectation they keep on increasing the number of the pages, but increasing number of pages will not be relevant. I'll tell you a book, Bharati Vidya Bhavan's and under R.C. Majumdar, the book is 3500 pages. तो वो spectrum से ज़्यादा relevant होना चाहिए, ठीक है? But still the UPSC paper has the question which is not mentioned in the R.C. Majumdar. Then तो इस basis पे कभी भी किसी बुक को मत देखो कि नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे, ठीक है। इट कुड बी रेलिवेंट ऑल्सो, इट कुड बी इररेलिवेंट ऑल्सो, एंड वट एवर इफ यू हैव द कवरेज ऑफ द कंप्लीट सिलेबस, सो स्लोली फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज एंड फ्रॉम अदर एरियाज यू कैन डू द वैल्यू एडिशन। सो देर इज नो नीड ऑफ, इफ यू हैवंट स्टडीड एनी बिग बुक, दैट्स ऑल फाइन, ठीक है, बट देन कोई एक रिसोर्स रखो जहां से रेफरेंस ले सको। सो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा कोई एक रिसोर्स, एंड आई वुड से दैट नॉट टू मतलब ब्रांडेड, ठीक है, मुझे अच्छा लगा इसलिए बोल रहा हूँ। विजन के पब्लिकेशन हाउस के जो 3 मॉडर्न के बुकलेट्स हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड, सो यू कैन कीप दैट एज अ रेफरेंस। हैव यू सीन इट? पब्लिकेशन हाउस बुक्स किसी ने नहीं देखा है? एनी वन ऑफ यू? यू हैव सीन इट, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। उसमें भी दैट बुक 1 वॉल्यूम 1 यू कैन लीव कंप्लीटली, ठीक है। वॉल्यूम 2 and 3 यू कैन यूज एज अ रेफरेंस मटीरियल। मैं मंगवा दूँ बुक अभी देखने के लिए? ठीक है, अभी I'll just ask somebody to bring it. एक घंटी बेल जा रहा है या नहीं जा रहा है? I think it is not going. मैं अभी जब I'll go ना, तो it is kept in the faculty room. They will bring it. I think हाँ somebody is coming. हाँ भैया आ जाना, आप आना। वो जो मॉडर्न वाली बुक रखी है ना फैकल्टी रूम में, ठीक है, वो तीनों बुकलेट उठा लाना, ठीक है। सो दैट इज वेरी गुड। मतलब आई वुड से कि मार्केट में अभी कोई बुक उतनी अच्छी लिखी हुई नहीं है, तो यू कैन गो अहेड विद इट। इट इज़ गुड, वेरी वेल प्रिंटेड, बहुत अच्छे से उसमें फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर देयर, स्टोरीज आर देयर। जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ाता हूँ, सो उस फॉर्मेट में है वो बुकलेट, ठीक है। सो 1 यू कैन लीव कम्प्लीटली, बट 2 and 3 इफ़ यू डोंट हैव, तो नए बैचेस में तो वही सबको मिल रहा है, पुराने जो लोग हैं उनको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन परचेज इट एंड ठीक है, तो गो थ्रू दैट। उसके अलावा कोई और रिसोर्स मत यूज करो, डोंट डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन क्लास नोट्स यू मस्ट गो विद, ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स आर समथिंग। सो अभी क्लास खत्म होता है तो ये सब ये देख लेना इसको, ठीक है, दीज 3 बुकलेट्स। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये बुकलेट 1, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, इसमें जो भी है ना इससे ज़्यादा ही पढ़ाया है मैंने क्लास में। देन एंड booklet 2 and booklet 3 is very good. So booklet 2 and booklet 3, and as you can see that flow chart, फिर उसके बाद then थोड़ा सा कलरफुल है, diagrams and everything. In fact it will give you idea कि मेंस में आंसर लिखते वक्त कैसे इनकॉर्पोरेट करें चीज़ों को, ठीक है, जो कि किसी और बुकलेट्स में वो सिंपल स्टोरी फॉर्मेट या फिर देन पॉइंट फॉर्मेट में दिया हुआ है। बट
ओनली फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट ईयर. जो लोग इस ईयर लिख रहे हो, कोई नया एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट डू दैट मिस्टेक. ठीक है, हिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ऑप्शनल एंड देन द अदर पेपर्स. देन सो दिस इज इट. ठीक है, कुछ और इफ यू वांट टू आस्क. देखो मैंने ना, यही है कि जब लोग ना शॉर्ट्स डालते हैं ना किसी मीडिया पे, तो आगे का कट पीछे का कट तुम्हें दिखता वही है जो तुम्हारा अटेंशन सीख करे, बट एंटायर एक्सप्लेनेशन यू डोंट सी. उपिंदर सिंह बुकलेट इज नियर अबाउट हाँ 1000 से ज़्यादा, 1300 पेजेस आर देयर एंड दोज 1300 पेजेस इफ आई मतलब इस हिसाब से अगर जो मैं उसका मतलब इवैल्यूएशन करूं तो दैट विल कम अराउंड 2500 पेजेस. ठीक है, सो see that in past 4 years there has been questions of ancient and medieval majorly from the Upinder Singh. ठीक है, majorly from the Upinder Singh. That is one source to go, but in that video I have also said that it is not possible to retain all the information. वो किसी ने कट कर दिया. अब आजकल होता क्या है कि क्लासरूम से जिसको भी अपने आप को पॉपुलर बनाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से किसी फैकल्टी का यहाँ से कट कर लिया, वहाँ से कट कर लिया, डाल दिया. यू आर सीइंग, I would say कि UPSC student is mature. ठीक है, you are mature enough to decide the things and subscribe the thing and go with the things. ठीक है, not with just, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग understand क्यों नहीं करते हैं कि just on the basis of the sorts that you just start believing a student who is doing it. So उसमें मैंने पीछे बोला है कि it is not possible to retain all the information. then cost benefit analysis पे ये सही नहीं है. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे इफ यू रीड उपिंदर सिंह यू कैन रीड अदर बुक ऑल्सो. ठीक है, यू कैन रीड अदर सब्जेक्ट बुक ऑल्सो वेयर यू कैन फेच मोर मार्क्स. मैंने उसी क्लास में बोला है कि बेटर होगा कि पॉलिटी पे ज़्यादा मेहनत कर लो, इकोनॉमी पे ज़्यादा मेहनत कर लो, एंड 4 क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल के लिए एक किताब को इतना टाइम देना, दैट इज नॉट रैशनल, दैट इज नॉट साइंटिफिक, बट दैट पार्ट इज नॉट देयर. देन सो मेरी बात समझो. और इस ईयर तो जो क्वेश्चन आए हैं क्लास नोट से ही हो रहे हैं सारे, डायरेक्ट क्लास नोट से, एक भी बाहर से नहीं है. मैंने जो डायग्राम्स बनाए हैं, जो ये बनाए हैं, तो यूपीएससी के पाले में गेंद होती है, हमारे पाले में नहीं होती है, तुम्हारे पाले में नहीं होती है. यूपीएससी 4 साल पूछा, अब लोग उपिंदर सिंह के पीछे भागेंगे. इस साल एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं, मतलब दोज क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम इट, मतलब इट इज काइंड ऑफ दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम द क्लासेस इटसेल्फ. तो you always have, as a UPSC student, you will have to evaluate your cost benefit analysis, time analysis, and you will always have to prioritize the subjects and कि किस पे ज़्यादा टाइम देना है और किस पे कम टाइम देना है. तो हिस्ट्री के जितने भी, अगर जो तुम उपिंदर सिंह नहीं भी करते हो, सपोज दैट यू हैवंट डन, यू हैव डन ओनली माई क्लासेस, 4 क्वेश्चंस में से 2 तो किसी भी गिवन कंडीशन में कर लोगे, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए क्या ये वाजिब है कि 3 महीने दे दो एक किताब को, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि सब कुछ याद ही रहेगा. ऑब्वियसली इट इज नॉट. देन तो गो थ्रू इट. ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? कुछ और पूछना हो तो बताओ. चलो, आई थिंक दैट मतलब वी डिस्कस्ड अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑल द थिंग्स, एंड इफ एनी क्वेरी रिमेन्स, देन सो दो आई नो दैट यू नो, ठीक है, बट स्टिल आई वुड राइट. You can get connected with the Telegram and the YouTube channel, ठीक है, of mine, मेरा. ठीक है, I'm just writing. So कितने लोग के पास Telegram नहीं है मेरा चैनल? I hope all of you are connected. You are connected ना? You don't know. So YouTube तो पता है ना? YouTube तो पोर्तुगीज वाला पक्का से देख लेना तुम लोग. एंड दिस ईयर आई वुड ट्राई कि मैं डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वीडियो रिलीज कर दूं. बट आई हैव टॉक्ड विद माई प्रोडक्शन टीम, सो थोड़ा उसमें टाइम इसलिए लगेगा कि आई वुड हैव टू विजिट द सिटीज़ फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड. ठीक है, तो कोचिन तो आई ऑलरेडी आइडेंटिफाइड फॉर द डच. ठीक है, बट फॉर ब्रिटिश आई वुड हैव टू गो कैलकाटा, बॉम्बे, ठीक है, एंड चेन्नई ऑल्सो, एंड इफ मतलब गॉड सपोर्ट्स टू ब्रिटेन ऑल्सो. सो देन विल डू एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम के पहले आई विल ट्राई. देन दिस इज द टेलीग्राम चैनल 1, इसी नाम से है, थोड़ा सा चेंज है. क्वांटम में यहाँ पे Q इज स्मॉल, नॉट कैपिटल. सो इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन आस्क मी ऑन इट. ठीक है, इसके थ्रू
मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि उसमें मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, तो इसमें फिल्टर्ड है. बिकॉज द व्हाट्सएप थिंग इज दैट कि देर आर सो मेनी थिंग्स कनेक्टेड एंड एज यू नो दैट कि इफ़ यू गो टू अ स्टोर यू परचेज समथिंग, एक फ़ोन मतलब मान लो एक पेन ही खरीद लिया उन्होंने, नंबर ले लिया और वो स्पैम करना स्टार्ट कर देते हैं. तो आजकल इतना स्पैमिंग है व्हाट्सएप एंड देन मेल पे. फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन आई थिंक दैट टेलीग्राम इज अ बेटर वन. ठीक है, कि जहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस मुझे विजिबल रहते हैं, दैट यू हैव सेंट अ क्वेश्चन एंड देन आफ्टर आई ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, so be connected with it and if any query, any help from my side, if you want, I will do. एक और चीज़ that if you haven't taken admission in mains advanced batch since most of you are foundation batch, तो उसके अगर जो कुछ नए notes होंगे I will upload in the telegram itself. ठीक है, all good? चलो, so I'll take your leave then. All the best to all of you. Be connected with me. Then चलो, thank you. And ये किताब देख लेना, ठीक है? So these all books you can see. ये तीनों, बट लेके मत जाना नहीं तो विजन को मुझे पैसे देने पड़ेंगे. The UPSC exam doesn't defeat you with difficulty. It defeats you with confusion, lack of clarity, lack of direction, and preparation that feels scattered. At Vision IAS Delhi, we rebuild your UPSC journey with structure, strategy, and support that doesn't waver. Get complete coverage of GSC, SAT, and essay step by step. PT 365 and Mains 365, so current affairs stop feeling like chaos. Personal mentorship, not just advice, but actual strategy guidance. Test feedback loops because growth begins where guesswork ends. Toppers didn't just prepare, they built the right foundation. Now it's your turn. This isn't just a course, it's where clarity, consistency, and confidence begin. The UPSC exam doesn't defeat you with difficulty. It defeats you with confusion, lack of clarity, lack of direction, and preparation that feels scattered. At Vision IAS Delhi, we rebuild your UPSC journey with structure, strategy, and support that doesn't waver. Get complete coverage of GSC, SAT, and essay step by step. PT 365 and Mains 365, so current affairs stop feeling like chaos. Personal mentorship, not just advice, but actual strategy guidance. Test feedback loops because growth begins where guesswork ends. Toppers didn't just prepare, they built the right foundation. Now it's your turn. This isn't just a course, it's where clarity, consistency, and confidence begin. The UPSC exam doesn't defeat you with difficulty. It defeats you with confusion, lack of clarity, lack of direction, and preparation that feels scattered. At Vision IAS Delhi, we rebuild your UPSC journey with structure, strategy, and support that doesn't waver. Get complete coverage of GSC, SAT, and essay step by step. PT 365 and Mains 365, so current affairs stop feeling like chaos. Personal mentorship, not just advice, but actual strategy guidance. Test feedback loops because growth begins where guesswork ends. Toppers didn't just prepare, they built the right foundation. Now it's your turn. This isn't just a course, it's where clarity, consistency, and confidence begin. The UPSC exam doesn't defeat you with difficulty. It defeats you with confusion, lack of clarity, lack of direction, and preparation that feels scattered. At Vision IAS Delhi, we rebuild your UPSC journey with structure, strategy, and support that doesn't waver. Get complete coverage of GSC, SAT, and essay step by step. PT 365 and Mains 365, so current affairs stop feeling like chaos. Personal mentorship, not just advice, but actual strategy guidance.
test feedback loops, because growth begins where guesswork ends. Toppers didn't just prepare, they built the right foundation. Now it's your turn. This isn't just a course, it's where clarity, consistency, and confidence begin.